पड़ो आ जो एनर्जी उत्पादन होची तार एफिशिएंसी भी अधिक रहबा दरकार तार लॉस कम रहबा दरकार देन एनर्जी ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग सोर्सेस बट ट्रांसफॉर्मिंग द एंटायर एनर्जी इकोसिस्टम दैट इज सप्लाई डिमांड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ताने एनर्जी हमें जो उत्पादन करूछु तार सप्लाई हम केते कर परछु से रिक्वायरमेंट हिसाब हमर डिमांड केते रहउची आ तापा हमर इंफ्रास्ट्रक्चर कोन कोन गढ़ी परिबो एगुडा तो ऊपर हमें ध्यान देबाको पड़िबो देन पावर डिमांड expected to double by 2040 75% of current energy is still fossil fuel based and 75% हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें पाउछु नॉर्मली कोल एंड हाइड्रो पावर को यूज करी जोटा तो हमें चेंज करे को पड़िबो आ हमें रिन्यूएबल एनर्जी ऊपर जेंति अधिक डिपेंड हे करियो से ऊपर ध्यान देबाको पड़िबो देन नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन कम्युनिटीज एंड स्टेट्स AI is an enabler for efficiency and grid stability AI कोना ना artificial intelligence हमको हेल्प करि परिबो जो रिन्यूएबल एनर्जी पर अधिक डिपेंडेंट हेबो the importance of decarbonization energy accounts around 73% of global greenhouse gas emission climate targets require urgent emission of reductions fossil fuel dependency is unsustainable and geopolitically risky transitioning to renewables is essential for energy security and affordability a chart पर आपण देखि परिबे इलेक्ट्रिसिटी आ हीट पछरे जो जीएनजी हमर ग्रीन हाउस गैस एमिशन होची सेटा अराउंड 31% होची तो टोटल हम जो एनर्जी को देखिबा 73% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन होची सेटा हमर एनर्जी डिपार्टमेंट होची तो सेटा को कमेबा पई हमें चेष्टा करिबा पड़िबो सेटा केमि करबो जो हम रिन्यूएबल एनर्जी को स्विच करिबा नेक्स्ट decentralized energy system माने कोन ना लोकल जनरेशन हो एनर्जी रो सेटा को हम किंति स्टोर करि परिबा देन सेटा को हम कंज्यूम करि परिबा दरकार पड़े जदि हमर अधिक अछि हम ग्रिड को सेटा को दे परिबा तो सेटा को होय decentralized energy generation तो एटा केते हि परिबो ना रूफटॉप सोलर माइक्रो ग्रिड्स कम्युनिटी बैटरीज एंड ए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉस थिला सेटा मिनिमम हे करिवो एटा रेजिडेंस टू डिजास्टर प्रोन एंड रूरल एरियाज से जेतोला हमर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जाय है तो वोल्टेज देखिबे आपण माने रूरल एरिया रे बहुत कम है जब हम सौर शक्ति लगे ही निज घरे हम विद्युत उत्पादन कर परिबा ताहले हम बेटर क्वालिटी रो इलेक्ट्रिसिटी हम निज पखे पाइ परिबा तो एटा होची हम निज पर भाग Next, benefit of decentralization. Decentralization का benefit यह है कि rural area, small town में easily electricity पहुँच पाएगा। हमको बने रहता जहाँ भी
एक्जिस्टिंग ग्रिड सह केमिति इंटीग्रेट करबा सेटा हमर प्रॉब्लम होछि तो सेहि पय हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो यूज कर परबा से प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन थ्रू रूफटॉप सोलर एंड मार्केट एटसेट्रा एक चैप्टर आपण देखि परिबे रिन्यूएबल एनर्जी हमर कैपेसिटी केते होछि from 2016 to 2020 our renewable energy capacity generation का अधिक होने की आवश्यकता है artificial intelligence माने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI system that performs tasks require human intelligence artificial intelligence माने है हमारे human mind जो भला काम करे कंप्यूटर मतलब से भला एल्गोरिथम यूज करेगी हमारा डाटा सेट ऑलरेडी पूरा फीड करथिबा ताको यूज करेगी जो भले हमें ए जे ह्यूमन कोन भाबी परिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भला काम करि परिबा इट इंक्लूड्स मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन एनएलपी एटसेट्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोन करे हमें जो डाटा को जो पैटर्न तको फीड करू जहां पास्ट रिकॉर्ड थाए ताको स्टडी करिकी हमर फ्यूचर डिसीजन को सीधी it has already transforming industries like healthcare, finance, manufacturing and data science. Next. From this एक picture का अपन देखी पहले artificial intelligence, machine learning and deep learning. Artificial intelligence होची machine मान को human रा behavior को mimic करिया को सिखाए machine learning होची subset of artificial techniques which use statistical method to enable machines to improve with experience. Then deep learning, it is a subset of machine learning which make computation of multi-layer neural network feasible. The case of AI in energy systems are increasingly complex, decentralized and dynamic. AI can optimize generation, storage, distribution and consumption, enables real-time forecasting, grid balancing and anomaly detection. It supports decision making and policy simulation and market optimization. AI can be operating system of the clean energy revolution. Introduction to smart grids. Smart grid माने कौन? जेतेबेले हमरो आमे सपोज घरे सोलर पैनल इंस्टॉल करिछु विंड एनर्जी जे आमे ग्रिड को फीड करूछु प्लस स्मार्ट होम एंड स्मार्ट व्हीकल यूज करूछु ए सब बड़ा तो एआई द्वारा कंट्रोल करिकी हमरो एनर्जी को एफिशिएंट करबा रो माने होची स्मार्ट ग्रिड अब स्मार्ट नॉर्मली ग्रिड में दीटा पैरामीटर बहुत इफेक्ट पकेट है गोटेला वोल्टेज गोटेला फ्रीक्वेंसी तो सोलर पैनल लागे तमे को वोल्टेज से उत्पादन କରୁଛ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗ୍ରିଡ୍ ସହ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ସେଟା କରିବା ହିଁ ମେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋଲାର ଲଗାଉଛୁ ସୋଲାରକୁ ଆମେ ଲୋଡ୍ ହେଉଛୁ ବଟ୍ ପିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ସୋଲାର ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥାଏ ତ ଆମେ ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତ ସେଇ ଟାଇମିଂ ଆଣ୍ଡ ପିକ୍ ଲୋଡ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଆଇକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା AI enhances fault detection, demand forecasting, and reliability. Next. Storing energy intelligence. Energy to generate करते how to store that energy. See energy to store केमती करें so that हमें next जो हमें दरकार पड़े वो इसमें use कर पाएगा. तो energy storage balance supply demand mismatched. तो battery are key enablers for renewables. AI optimizes storage dispatch, charging and discharging cycle. Predictive control extends battery life and performance. Demand response analysis. Demand response माने कौन? Adjusting consumer load based on grid condition. Grid का condition हिसाब से हम consumer का load को adjust केमती करेगा सेटा पे आपे आपे हमारे अच्छे आपे सबले घरे available नथिबे जे हम load को control करिया तो आमे जति स्मार्ट होम रे AI system यूज करूचे तो AI can do our काम रे AI
पछी ग्रिड ऊपर भी अधिक लोड पड़ेगी से सब कैलकुलेशन आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके करनी पड़ेगा helps avoid blackouts reduces need for peak plans blackout केतले हुए जेतले लोड जनरेशन कम थिबो पर डिमांड अधिक थिबो से टाइम पे हमर ब्लैकआउट होकर पॉसिबिलिटी अधिक थाए तो एआई कोन करिवो कि ऑलरेडी कैलकुलेट कर दे करिवो और लोड फोरकास्ट कर दे करिवो जे आगो केते की डिमांड रहिवार अछि से हिसाब रे आगो जनरेशन केते रहिवार अछि नेक्स्ट EVs batteries on wheels. Rapid growth of EV adoption adds load to the grid. जब हम EV यूज करो ना तो हमें तो चार्ज करने को पड़ेगा. तो चार्ज करो तो तार लोड टाइप हमें ग्रिड ऊपर पहुंच अल्टीमेटली. तो ग्रिड रा लोड पहुंच. तो सही लोड को कितने कमी भी करेगा. जब भी हमें सोलर एनर्जी और अडॉप्ट कर भी करेगा. तो एयर फोरकास्ट EV charging pattern and optimization load schedules. It enables coordinated energy flow in smart cities. Improving energy efficiency. Energy efficiency, the cheapest source of clean energy. Day to day, coming year to day, our energy requirement body change. Solution होची कि हमें कम एनर्जी यूज करेगा अଯଥା एनर्जी वेस्ट करिवे नाही तो कम एनर्जी यूज करिवे तो बोले जेतले हमर एआई थोड़ा हमें प्रेडिक्ट करि परिबे जे आपको ए एनर्जी यूज करिवे रिक्वायर्ड हो कि ए एनर्जी यूज करिवे इति के हम पहले चॉइस करिवो तो एटा हमें एआई यूज करके करनी पड़ेगा सोलर एनर्जी फोरकास्टिंग सोलर पैनल यूज करना पड़े को टाइम पे तरफ पीक डिमांड रखो को टाइम पे ऑफ पीक डिमांड रखो तार फोरकास्ट करने में हमें एआई को यूज करना है एआई यूजेस सैटेलाइट इमेज एंड वेदर डाटा फॉर सोलर irradiance prediction machine learning models predict solar output ahead to day ahead helps with better grid scheduling and load matching reduces curtailment and supports grid stability. Wind power optimization. Artificial intelligence predicts wind speed and turbine performance in real time, reduces fluctuation and improves integration into the grids. AI tunes turbine setting for efficiency, enables maintenance alerts before mechanical failure. Hydro resource management. AI forecast inflows based on rainfall, snowmelt, reservoir levels, optimizes water uses for power generation and irrigation. It prevents delays and ensures efficient rescheduling, supports dam safety monitoring with sensor data. Load forecasting with artificial intelligence. A graph में देखी गई पहलेगा कि ट्रेडिशनल मॉडल ओवरऑल लोड फोरकास्ट कर पड़ची जबकि आर्टिफिशियल बेस्ड टूल्स ओवरऑल लोड फोरकास्ट कर पड़ची डॉलर लाइन में येलो कलर लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरऑल लोड फोरकास्ट कर पड़ची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन करे ना हिस्टोरिकल डाटा वेदर हॉलिडे इवेंट ये सब गुड़ा तो ऑलरेडी काउंट को नहीं नेक्स्ट लोड फोरकास्ट करे जबकि हमारा पूर्व जो ट्रेडिशनल मॉडल रहेगा इतने गुना डाटा को कंप्यूट करी पड़े नहीं it improves scheduling and dispatching reduces need for expensive rigid power grid fault detection and localization AI monitors sensor data voltage current and waveform anomalies detect faults short circuit fault line break fault in milliseconds our grid fault detection that traditional method जितने भी लगे AI ताकि बहुत अल्प टाइम में डिटेक्ट करे it artificial intelligence कौन करे वो जगह में fault नहीं जिससे डिटेक्ट करेगी within specific zone और वो लाइन सेक्शन में नहीं ताऊ करे आपको सूचना देगी करे it reduces outage duration and improves service reliability जब हमें जल्दी fault डिटेक्ट कर पाएगा ताहले fault को रिमूव करे पाएंगे और अल्प टाइम लगे तो सिस्टम रिलायबिलिटी बढ़ेगी नेक्स्ट
organizations and restores healthy network balance, reduces downtime and manual intervention, critical in disaster recovery, and makes grid resilient, adaptive, and future ready. Next. Grid asset condition monitoring. AI processes data, IoT, and thermal imaging data. तो हमारा ग्रिड रे जो भी इक्विपमेंट गुड़ा लागछि तार लाइट केते ताहा को प्रेडिक्ट करि परिबा यूजिंग AI detects early signs of transformer breaker and line degradation. It predicts remaining useful life of battery, supports condition based maintenance instead of CPU based. Condition based maintenance अब जब आगो जानता कि इक्विपमेंट हमर टिकली खराब होना हो जाए तो हमें आगो तक सजेस्ट नहीं करेगा rather than to go for the breakdown. Next. Integration of distributed energy sources. Distributed energy sources make power flow bidirectional. Or artificial intelligence manages complexity of local injection and withdrawal, balances local grids in real time. It prevents reverse flow from destabilizing the main grid. AI is an invisible orchestra keeping balance in a complex multi-dimensional network. Case study: AI in India's power grid. India ने हमारा कोसोवो and RLTC using artificial intelligence, frequency and demand forecast करने में गवेषणा करुछंती and smart grid को pilot mode implement करा होची ए डायग्राम में देखिए ग्रिड रीजन को डाटा है तो forecast renewable generation for daily dispatch planning and outage prediction model ये सब यूज करके हमारा एनर्जी ग्रिड को पायलट मोड में एआई बेस्ड करा हुआ है चेष्टा करा है स्मार्टर एनर्जी कंजप्शन begins at home हम दुहर करे कितनी कंज्यूमर मैंने जनरेट कर परिवे एनर्जी स्टोर कर परिवे एंड मैनेज कर परिवे AI personalizes energy used for comfort, cost and carbon saving. Enables automation across residential, commercial and industrial growth. It is a key to building responsive, intelligent energy ecosystem. Smart homes powered by artificial intelligence. Artificial intelligence integrate with smart thermostats, lights and appliances, learns user behavior to automate comfort and saving, adjust temperature, lighting and charging pattern. It reduces peak load and energy bills. Popular tools like Google Net, Amazon Alexa or Tata Power smart energy solution. It uses artificial intelligence. Building energy management using AI. AI को यूज करके हमें बिल्डिंग होल बिल्डिंग एंड होल इंडस्ट्री में भी एनर्जी मैनेजमेंट करती है. नेक्स्ट. Appliance level energy disaggregation. AI powered smart meter identity used by individual appliances. हमें अपने मोबाइल में artificial intelligence यूज करके वो मीटर को मशीन कितने लोड होची वो लोड द्वारा हमारा ऑप्टिकल एनर्जी बिल आती है सब पूरा इंफॉर्मेशन पाई जाएगा. जितना हमें से इंफॉर्मेशन पूरा को देखो तो हमें नीचे सच थे जो छोटा हमारा बिल कॉस्ट. नेक्स्ट. Energy behavior prediction. Artificial intelligence learns routine and adjusts energy use accordingly. Provides frequent nudge, encourages off-peak use, turns off idle appliances. Artificial intelligence use करले हमारा घरे जो appliances पूरा का ऑटो ऑन करके रखते हो से पूरा का ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. ऐसे पूरा का रेगुलेट करा जाए करेगा. तो personalization makes energy saving automatic and it is invisible to user. तो हमें जान भी पाए मतलब हमें बहुत मात्रा में एनर्जी सेव कर भी करते हैं. नेक्स्ट. एनर्जी बिहेवियर प्रेडिक्शन. तो अगर एनर्जी का बिहेवियर केमिति रहेगा वो टाइम में एनर्जी हाई रहेगा वो टाइम में एनर्जी लो रहेगा वो टाइम में डिमांड अधिक रहेगा. ये सब पूरा में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके प्रेडिक्ट करती है. Scaling intelligence to urban infrastructure. AI managed energy across building, EVs, public lighting and transport. It
efficiency ଆମର energy use को भी control करेगा तो ultimately ଆମର बहुत energy बच ପାରିବ और clean energy भी पाइब तो बहुत सारा डाटा प्रोसेसिंग करिवाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कम टाइम में बहुत सारा डाटा जो प्रोसेस कर पाउची तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें स्विच करबा दरकार तो फ्यूचर आउटलुक एंड अपॉर्चुनिटीज 2025 पर्यंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी को कन्वर्ट करके हमें जेमति नेट कार्बन एमिशन जीरो होगा पड़िबो से ऊपर ध्यान देबा अछि देन डिजिटल energy startups are scaling globally. Convergence of AI, IoT, blockchains, and cloud sets the stage. AI will move from pilot projects to mission critical infrastructure in the next decade. Next, our discussion on जो स्मार्टफोन नो पायलट प्रोजेक्ट ऊपर आज हम डिस्कशन करछे जो सोलर पावर विंड पावर एंड थ्योरेटिकल डिस्कशन करछे आ किछि दिन पर हम निज घरे भी एवला सोलर पैनल लागिथिबो हमें से जिनिस को यूज करबो आ किछि दिन हम मीटिंग क्लासेस आ 2 ରୁ 3 वर्ष पर advanced forecasting with next generation artificial intelligence moving from weather based to satellite plus data plus demand driven forecasting AI models now handle uncertainty quantification accurate forecast द्वारा हम पावे ना operational excellence है plus revenue gains तो सेतोले हम पाइबा कि accurate forecast जेते हम artificial intelligence है next AI enables smart cities and campus AI connects building PV solar panel street light into unified network गोटे नेटवर्क में सब बड़ा जेते कनेक्टेड है किछि भी चेंजेस है हमको इंफॉर्मेशन मिल जाए आ से इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली हम माने जो भी डिसीजन करबा से डिसीजन में एक गोटे न्यू डाटा हिसाब से एआई को फीड करे तो सेटा को हम जनरेटिव एआई the self-optimizing system for energy use, emission and cost, live dashboards and control via mobile or voice interface. Case studies Master Institute UAE, Somlo in Korea, Infosys campus in India. They use AI and generative AI in home appliances. Next, AI in storage optimization. It predicts optimal charging and discharging cycle, manage life cycle and thermal condition of lithium-ion and flow batteries. It forecasts grid demand and battery value in real time. Enables battery as a service business model. Smarter batteries माने low cost में भी बहुत अच्छा है, plus grid cycle and flexibility भी रखते हैं. AI for inclusive energy access maps energy poverty using satellites plus socio-economic data. Design microgrid for optimal community coverage. AI यूज करके हमें को जगह रे इलेक्ट्रिसिटी के पहुंच पाना से जगह को डिटेक्ट करके करबा और से जगह रे एनर्जी किंतु पहुंचबो समस्त क्लीन एनर्जी पाइबे कहा हमें कंफर्म करके करबा The world is moving fast 40 plus countries 40 से अधिक देश माने इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस energy strategy and research and development. UNIAWF recognizes artificial intelligence as critical to SDG 7 and net zero goals. Every major utility is piloting or deploying AI in core operations. AI in energy is now a movement, not a niche. India's decentralized energy landscape. Among India, component approaches are faster the electrification. Ujjwala Yojana हिसाब से 100% village electrification declared recently project leading to get reliable and quality power जेमति पहुंच परिबो सेटा ऊपर अधिक ध्यान देबा पड़िबो देन हला decentralized solar PM issue 1.5 billion standalone solar pump sanction farmer selling surplus power to distribution companies rooftop solar installed 11 gigawatt rooftop target which 40 gigawatt by 2026 high adoption कोटी होची ने गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली के अधिक adoption होची solar power mini and micro grids deployed in UP Bihar Jharkhand reduce
एक्सेस इन रूरल और रिमोट एरिया रे जंती हमें एनर्जी को पहुंचे नहीं पाइबा जोठी ग्रिड रो हमें सप्लाई दे पारु सेठी सोलर एनर्जी यूज करके एनर्जी पहुंचे नहीं पाइबा एटा प्रमोट होची डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम दैट जोटा कि डीजल और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी हमर कम होची इट एम्पावर्स लोकल कम्युनिटीज विथ स्मॉल स्केल एंड सेल्फ रिलायंट एनर्जी सॉल्यूशन तो लोकली लोकମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଅନେକ କାହା ଉପରେ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନେକ କାହା ଉପରେ ସେ କୋଲ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଉପରେ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇକି ନିଜେ ନିଜେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେନ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାୱାର ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଲୋକାଲି reducing transmission dependency, empowers household farmers, rural institutions to become producer plus consumers, act as a bridge between complete off-grid village and grid-connected areas. There is a National Action Plan on Climate Change. The National Action Plan on Climate Change is the 2008 Government of India द्वारा ହେଇଛି एरो लॉन्ग टर्म प्लान होची अप टू 2030 पर्यंत aligned with India's nationally determined contributions under Paris Agreement. A national action plan on climatic change no objective होची sustainable growth path by addressing climate change, promote energy efficiency, renewable energy and decentralized solutions, balance economic development with environmental protection. नॉर्मली हम जो फॉसिल फ्यूल ऊपर एनर्जी पे डिपेंड करू तकर हमर एनवायरनमेंट पर बहुत इंपैक्ट पड़ुची तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज रा मूल लक्ष्य होला जेते हम परिवेश प्रदूषण भी होबनी हम क्लीन एनर्जी भी जनरेट करियो तो नेशनल एक्शन प्लान भितरे ए सबुरा आछि नेशनल सोलर मिशन promotes large-scale solar and rooftop solar decentralized manner. Target vision होची 100 gigawatt solar by 2022, achieve up to 70 gigawatt and will scale further to 80 gigawatt by 2030. There is a national mission on enhanced energy efficiency. It covers energy saving through perform, achieve and trade scheme, ESCO model and energy efficient appliances. There is a national mission on sustainable habitat, urban planning with energy efficient building, transport and waste management. National water mission, conservation of water and efficient irrigation system. National mission for a green India, afforestation and carbon sink creation. National mission for sustainable agriculture, promote climate resilient crops, irrigation efficiency and renewable energy used in agriculture. National mission on strategic knowledge for climate change, build research data knowledge system for climate adaptation. National electric mobility mission, it is several and EV को जैसे अभी यूज करें कि हाइब्रिड व्हीकल को यूज करें ताऊ पे काम करें green energy corridor 2015 रे मिक्सचर पावर एंड एमएनआरई तरफରୁ phase 1 और phase 2 डेवलप कराଯାଇଥିଲା green energy corridor ପାଇଁ with a dedicated transmission network for renewable energy. It facilitates evaluation, integration and balancing large scale and decentralized renewable power into the grid. It supports India's goal of 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. There are key features phase 1 रे interstate transmission system with renewable grid सेक्टर अधिक renewable energy जेके हम सिस्टम सह इंटीग्रेट हेतिबो ताहा ऊपर मेन फोकस करा जायतिला नॉर्मली राजस्थान गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र ए सब स्टेट रे इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करिया थिला इन्वेस्टमेंट अराउंड 10141 करोड़ हेतिला phase 2 रे एक्सपांड कला 7730 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन and 24,000 MVA of substation capacity by using green energy corridor. There is a PM Kusum, the Pradhan Kisan Urja Suraksha एवं उत्थान महाअभियान scheme. इसमें कौन होची ना हमें डीजल यूज करेगी जो एग्रीकल्चर
यूज करछु तार द्वारा हम सोलर पैनल यूज करके को भया पंप यूज करिबा से करे एटा ध्यान करछि एटा एनहांस करछि फार्मर्स मानकर इनकम बाय यूजिंग सौर शक्ति तो 30 to 50% सब्सिडी ऑन टोटल कॉस्ट विल बी बेयर बाय गवर्नमेंट एटा एप्लीकेबल होछि स्टैंड अलोन सोलर पंप बाय also एटा ग्रिड कनेक्टेड माने सोलर पैनल जो से इंस्टॉल करे दैट से सोलर पैनल गुडा ग्रिड कनेक्टेड भी नहीं से गुडा से ध्यान रखुछि सोलर पावर प्लांट्स बाय farmers can set up to set up grid connected solar power plants up to 2 megawatt capacity. This can be installed on barren and fallow land. Farmers can set the generated capacity to local distributors also. Tariff is determined by state electricity regulatory commission. Implementation scheme is implemented through the designated department of respective state governments. Next. The PM Kusum is a very technical component. Component A, grid connected solar power plants. The 2 megawatt project का farmers ने individual solar power plant dedicated जोड़े की grid सह connected है. Component B is standalone solar pumps. इतने solar pump गुड़ा तो grid connected नहीं हो. only निजे जहाँ energy generate करेगा सही सरल चाहिए. Farmers एक जोड़े practically 50% subsidy करेंगे installation cost है. Then deregulation of agriculture sector and agriculture. Component C separate solarization of grid connected pumps. जो pump गुड़ा तो traditional उसको डीजल यूज करके agriculture normal grid electricity करने की करते हैं. तो सही grid connected pump गुड़ा को बोले आपने solarization करेगा. The existing grid connected agriculture pumps can be solarized. Farmers can use solar power for irrigation and sell surplus power to discoms via net metering. Then provides additional income source for farmers. Next. Achievement now in PM Kusum. From the figure, we देखी पड़ेगा हमारा achievement कितने दीजिए कितना जिनसे solarized energy प्रतिवर्ष component है. Then as the प्रधानमंत्री सूर्य योजना मुफ्त बिजली योजना. It is launched in February 2024 by Honorable Prime Minister. Implementation period was 2024 to 26. It promote the decentralized rooftop solar power plant in so that free electricity up to 300 unit reduce dependence on central grid and fossil fuels. Implementation central agencies are Minister of New and Renewable Energy supports distribution companies, state renewable agencies and local bodies. Unified online system for application, subsidy disbursal and vendor selection can be done by online. PM Sujala Yojana key features target and the 1 crore household to be covered through PM Sujala Yojana. Free electricity made for 300 units per month, free of cost. Financial benefit driver subsidy government of India provide technology. Additional incentive for households generating surplus power and giving back to discoms by net metering. Decentralized जेहेतु household में mini power plant रोजे के transmission loss and distribution loss भी reduce करते. Expected impact of PM Sujala Yojana empowered households direct participation in India's energy transition. It is very cost saving and contribution towards India's 500 gigawatt non-fossil capacity target by 2030. Self-reliant village and city को promote करो तो कहते हैं अपना आत्मनिर्भर भारत को भी promote करो. Renewable Energy Management Center. Renewable energy coaching variable. It is सबको weather ऊपर depend करता है. हमारा पानी का अगर कोवड़ा है तो सही तरह हमारा विदेशों के उत्पादन को निर्भर करें. सिंपल तरह accurate forecasting और scheduling करना बहुत अत्यंत आवश्यक है. To maintain grid stability. India established renewable energy management
Management Centers to address this challenge. Our Renewable Energy Management Center Government of India जो कि already load forecasting और load scheduling में help करेगा. এটা 2019 to 2022 में भी था. Also now India SLDC and RLDCs मिसिकी काम होती है. ये फंक्शन वाले real time monitor करियो, forecast करियो and schedule करियो renewable generation. Artificial and machine learning models used for solar and wind forecasting, load forecasting, optimal scheduling and grid balance. The Renewable Energy Management Center used artificial intelligence in forecasting of the renewable loads. Enhance reliability of renewable energy in the grid, reduce curtailment, ensuring higher revenue for solar and wind generators, help India achieve 175 gigawatt renewable milestone by 2022 with better grid management, foundation for future artificial intelligence driven smart grids, and India Energy Star. India Energy Star, open digital platform and APIs for common digital architecture for utilities, consumers, startups and innovators. It promotes interoperability and innovation. Integration of distributed energy sources, rooftop solar, farm solar, EV chargers, batteries, microgrids, enables consumers to participate in the energy market. It is AI-driven analytics. AI is used for grid balancing, demand prediction, renewable forecasting, and energy trading. Real-time data sharing between stakeholders. Implementation timeline material constitutional sufficient to the phased rollout across states and discoms. Year 2027, integration with smart grids, AI-based smart homes, demand response, and digital platform networks. Because Bharat 2047 vision. 2047 because Bharat our vision होची 100% renewable energy आने generate करेगा. AI managed national energy internet यूज़ करेगा. अब हमें energy कितनी export करेगा. एज ए सिटीजन आमे प्रोजेक्ट केमती होगा सेटा हमरो मेन लक्ष्य होची तो हमरो मूल लक्ष्य होची कि कम एनर्जी को बड़ा यूज करेगा और कम एनर्जी यूज करेगा सह क्लीन एनर्जी को बड़ा यूज करेगा और सोलर और विंड एवं रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें डिपेंडेंट होगा rather than dependent on coal and hydro power. ये सब में हमारा तो बोले कहते को जितने हमें AI को हमारा existing system सह integrate करेगा सिचुएशन एटा संभव नहीं करेगा. AI will shift from supporting role to central nervous system of the energy. Opportunities span climate equity, efficiency, economics, future proofing energy digitizing it first. More leadership including innovation and ethical design are the future is not electric or digital. It is both. We have to use both electric and artificial intelligence to secure our future. Ago energy तोमरे हमको दरकार होची प्रति उठे केस में तो हमें कितनी clean energy पाइपेगा with control हमारे तक थी कि how much energy पर हमें dependent नहीं करेगा. सेना पर ध्यान रखना पड़ेगा. Professor Navin Kapoor, Head of the Department of ETC, से इंजीनियर आनमोल महाराणा मैम को संबोधित करेंगे.
ধন্যবাদ স্যার। বর্তমান পাঁচজন টি ব্রেক বের করছি। আফটার টি ব্রেক উই উইল স্টার্ট আওয়ার নেক্সট সেশন। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ 5 ମିନିଟ୍।